Yes. Okay. So you are well aware of the मैम operator. Yes. लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये होता है ना कि मैम लाइक कभी जैसे हम लोग कोई डेटा टाइप यूज कर रहे हैं Hmm. तो उसको लाइक हम लोग एक पर्टिकुलर रोल असाइन कर देते हैं कि वो वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। Mm-hmm. मैम वो होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Operator overloading. Okay. So we'll elaborate it. Okay. Suppose you have operators like plus, minus, multiply. You know what type of operations these perform. है ना? Plus operator, what it does, whatever is the left hand side value and whatever is the right hand side value, it will add those two values and give you some add. It will give you add sum. Yes, it will give you add sum. Now, what is the data type of the values which you are using on left hand side and right hand side? These are integer, float, yes, double, yes. We are using primitive data types. What we are using? Primitive data types. What if I want to use this plus operator for user defined data type? Can you tell me any user defined data type that we are currently studying? मैम क्लासेस। We are studying classes, है ना? And the variables of type class, we call them objects. Yes. So if you have created any class with the name A, and in the driver program, I'm creating an object of, I've created two objects of type A. Is this statement valid? C equals to A plus B. Yes. C is again an object of type A. Can you write it like this? यस मैम वैलिड तो हम उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर दिया ना। No, what it will do, basically what it will do. C is again a object of type A, and I'm writing C equals to A plus B. C, A, B, all are objects. What plus will do here? So can you do this? You just try. Can you do this? So what we want is this plus operator. Actually, what this operator do, it add the value at left hand side and right hand side. But for user defined data type, we also want it to behave exactly the same way. We want that in this case, this operator should add A object with B object. That is, whatever are the data members here, it should add the corresponding data members. We want this. We want this thing. So what we can do, we can define this plus operator. We can redefine this plus operator in this particular class, so that whenever this statement comes in your program, that particular function gets invoked and the corresponding data members get added. Okay, so we are defining a new role, yes, to this plus operator. Okay, so this plus operator. So in this, I'll tell you how we can define and what we can do. So making your these operators, okay, to work on user defined data types is something that is related with operator overloading. Okay, now again I want to discuss one more thing. Now tell me one thing. You have this plus operator, okay, it will add say some 1 and 2, it will give us 3. Okay, and if you want to add two objects, A plus B is equal to, say you want to take it in some third object, right? Now there will be some data members that are in A and B. Suppose it was integer X, okay? So one in X will belong to like this. It will be A dot X and one will be with the object B. So it will not, this plus operator will not automatically do A dot X plus B dot X and it will allocate it to C dot X until or unless you define in your code, to behave this plus operator like this. It should add A dot X and B dot X. But for that thing, you have to define this, define some function that can perform this operation. Okay. So how we will do that, we will see. Before getting into much this coding part, let me discuss more about this. Okay.
So as you can see, I have already told you that overloading means you can give additional meaning to some operators, C++ operators, जितने भी operators हैं, you can give some additional meaning to operators. Means minus will not just subtract the integer values या float values. You can use minus for other operations as well. Okay. So giving additional meaning to the existing operators means operator overloading, right? But there are few operators which you cannot overload. Those operators are class member SS operators. यहाँ bracket में कुछ लिखा नहीं है. Assume it to be this and this. You know, you can use these operators to access data members of class. Yes. So you cannot overload these operators. Moreover, you cannot overload this scope resolution operator. We cannot overload this size of operator. Conditional operator. इसको क्या कहते थे और conditional operator को? Ternary operator. टर्नरी ऑपरेटर है ना. हम इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते. हम इनको ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें जो ऑपरेंड्स होती हैं वो वैल्यूज नहीं होती. उसमें क्या होते हैं? क्लास नेम. साइज ऑफ में आप क्या लिखते हो? ऐसे लिख देते हो, साइज ऑफ इंट. स्कोप रेजोल्यूशन के आगे आप क्या लिखते हो? जब आप एक मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हो तो स्कोप रेजोल्यूशन के आगे क्या आता है? क्लास नेम. इसके बाद क्या आता है? फंक्शन नेम, मेंबर फंक्शन का नाम. तो इस तरीके के ऑपरेटर को आप क्या ओवरलोड करोगे? ठीक है. सो दीज आर द ऑपरेटर्स व्हिच यू कैन नॉट ओवरलोड, राइट? एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच इज अगेन important to understand. Just wait. If you see here it is written कि semantics of operator को extend कर सकते हो. मतलब plus can be used to concatenate two strings. Okay. प्लस को आप कंकेटिनेट कर सकते हो, दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट के लिए यूज कर सकते हो, दो ऑब्जेक्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा मेंबर्स को ऐड करने के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन आप उसका सिंटेक्स चेंज नहीं कर सकते हो. ओके. ये आपने ध्यान में रखना है कि आप उसका सिंटेक्स चेंज नहीं कर सकते हो. जो ऑपरेटर का जो सिंटेक्स रहता है उसका वही रहेगा. ओके. सिंटेक्स नहीं आप चेंज कर सकते. और सिमेंटिक्स को भी आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो. मान लो आपने अपने प्रोग्राम में प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया. ठीक है. आपने इसको ओवरलोड किया. आई विल शो यू दिस विद एग्जांपल एज वेल. लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार इसको ओवरलोड कर दिया तो अपने प्रोग्राम में जहां पे भी आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो उसका वही दूसरा मतलब आएगा, रीडिफाइंड मीनिंग आएगा. नो, ऐसा नहीं है. ये अपना ओरिजिनल मीनिंग इनका कभी लॉस्ट नहीं होता, वो इसका रहता है. ये हम आज जो प्रोग्राम करेंगे उसमें भी चेक करेंगे. ठीक है. अगर मैं भूल गई तो एक बार रिमाइंड करा देना. वी विल आल्सो सी दिस थिंग दैट ओरिजिनल मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर इज ऑलवेज रिटेन्ड, इट इज नॉट लॉस्ट. फाइन. So see, I will tell you just till this point. Okay, this point. After that we will do code, because it is very easy to understand theory related to some programming with the example code. है ना? Just reading out and understanding maybe may trouble you. Okay, but one thing we will just learn that how we can overload an operator. You know, if you want to redefine an operator, then you have to specify somewhere the new meaning of that operator in your code. It means I need some piece of code to redefine the operation. Now that redefinition of the operator is known as operator function. मतलब पहले प्लस क्या कर रहा था? वो दो वैल्यूज को ऐड कर रहा था. अब मैं चाह रही हूँ कि वो कुछ और काम करे, तो उस कुछ और काम को आप कहीं डिफाइन तो करोगे. उस कुछ और काम को आप कहाँ डिफाइन करोगे? ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. बट ये एक फंक्शन बनाओगे आप जिसके अंदर आप इसका नया रोल बताओगे. ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑपरेटर फंक्शन. ठीक है. तो ऑपरेटर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसके सबसे स्टार्टिंग में उसकी रिटर्न टाइप आती है. तो ऑपरेटर फंक्शन भी एक नॉर्मल फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप होगा. रिटर्न टाइप क्या करेगा? जो आप यहाँ रिटर्न करवाओगे, जो भी टाइप, इंटीजर रिटर्न कराओगे, फ्लोट रिटर्न कराओगे या ऑब्जेक्ट रिटर्न कराओगे, वो यहाँ आएगा. उसके बाद क्लास नेम आएगा. ठीक है. आई टेल यू व्हाई क्लास नेम इज रिक्वायर्ड व्हेन जब प्रोग्राम करेंगे तब. उसके बाद ऑपरेटर, ये कीवर्ड है बेटे, दिस इज अ कीवर्ड. ओके. देन दिस इज एन ऑपरेटर ओपी. जैसे अगर प्लस के लिए होगा तो कैसे लिखेंगे? OPERATOR ऑपरेटर प्लस, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स.
आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आप बताओ कि आप क्या करवाना चाह रहे हो, व्हाट इज द चेंज दैट यू वांट टू डू। ठीक है, ये तो हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन के बाद हमें ये सीखना है कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। ओके, वी विल नाउ लर्न हाउ वी कैन कॉल। सो everything is written here, okay, but what we will do, we will first jump to the code, then we'll come back to this theory part. It will become very easy for you to understand. Okay, we'll spend 2 lectures on the basics, don't worry. कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? यस, स्पीक अप। यस मैम, वेरी लो वॉइस। ओके, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैं कर रही हूँ अभी, इस एग्जांपल में मैं एक यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटे? यस, व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स? जिसमें कि सिर्फ वन ऑपरेंड होता है। Okay, so let's see how we will do this. Very interesting problem and very easy to understand. Okay, मैंने एक क्लास बनाई स्पेस नाम की। ठीक है, जिस लाइन में भी आपको दिक्कत आएगी जस्ट स्टॉप मी देयर। ओके, यहाँ मैं 3 डेटा मेंबर्स ले रही हूँ। दीज आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स, int x, int y, int z. Fine. Then I am declaring a public section of this class. I'm taking one function, get data, and I'm not using constructor. Okay, मेरी अपनी मर्जी है, आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। Why I'm using this function get data? I will initialize x, y, and z. Any doubt till now? Then I'm writing in another function display. So we are very intelligent now. We know that the job of this display function is to display the values of x, y, and z. I hope you are typing along with me. Are you? Okay. Now comes a new thing. Okay, what's new? I want to overload this unary operator. मैं चाहती हूँ कि ये माइनस वाला साइन कुछ अलग काम करे। ठीक है, ये क्या करेगा? कुछ अलग काम क्या करेगा? मतलब इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी उसके ऊपर मैं इस ऑपरेटर को यूज कर पाऊँ। ठीक है, फॉर दैट आई वांट टू डिफाइन एन ऑपरेटर फंक्शन। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप void है बेटे, void, and the name of this function is, yes, name consists of 2 parts. एक तो ऑपरेटर कीवर्ड और एक ऑपरेटर। ये दोनों मिला के क्या बनता है? ऑपरेटर फंक्शन का नाम। गॉट इट? ऑपरेटर फंक्शन का नाम। उसके बाद ब्रैकेट में आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट दो। मेरे केस में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो void। क्लियर बेटे? And I have given here semicolon because what I have done here, I have just declared an operator function. Okay, I have just declared an operator function. Now I want to define this operator function outside this class. इसमें कोई भी डाउट है बेटे आपको? प्लीज। मैंने ऑपरेटर फंक्शन बनाया है। ऑपरेटर फंक्शन का नाम कैसे लिखते हैं? ऑपरेटर कीवर्ड एंड फॉलोड बाय द ऑपरेटर व्हिच यू वांट टू ओवरलोड। आगे रिटर्न टाइप, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स। सिंपल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप में से कोई भी बता सकता है मुझे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द हेडर ऑफ डेफिनेशन। एनीवन वुड लाइक टू टेल definition of header of definition for operator function? Yes, try, speak up. Void space, yes, resolution operator, operator op, operator के बाद मैम जो भी हमें कन्वर्ट करना है
Then And return type argument. arguments. Good, good, Sahil. Very good. I would have written your name, but let's write in comments. Okay. Good, Sahil. Now I will define this function. मैं क्या चाह रही हूँ, ये function क्या करेगा? X data member को क्या कर देगा? -x. Y को क्या कर दे? -y. Okay. Z को क्या कर दे? -z. Is this fine? काम खत्म. इसको यूज कैसे करना है वो अभी हमें सीखना है, ठीक है. लेकिन हमने स्पेस क्लास के लिए एक ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन किया है. हम ये चाह रहे हैं कि जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसा कुछ ऑपरेटर हम यूज करेंगे एक पर्टिकुलर वे में, तो ये ऐसे बिहेव करेगा. हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है. नाउ राइटिंग द ड्राइवर प्रोग्राम. I have created one object. Okay, the name of the object is S. Let's call S dot get data. Give 1, 2, 3. Simple. Then S dot display. एक बार देख भी लेते हैं values को. Then I want to call this unary operator. So how we will call? We will write the operator first and then the object. कैसे call करते हैं? Operator space object. ठीक है. You can also call it like object first and then operator. ये हमने क्या बनाया था बेटे? This is operator function. फंक्शन बनाया है तो इसको कॉल भी करोगे. कैसे कॉल करोगे? पहले ऑपरेटर फिर ऑब्जेक्ट का नाम, या पहले ऑब्जेक्ट बाद में ऑपरेटर. सो व्हाट आई हैव यूज्ड, पहले ऑपरेटर देन ऑब्जेक्ट. जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा. सिंपल. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. ओके. सो आप कमेंट्स में ऐसे लिख सकते हैं, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, overloaded operator functions can be invoked as. लिखते हो ना आप बेटे, जो भी मैं यहाँ क्लास में लिखवा रही हूँ आपको साथ साथ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट दीज थिंग्स डाउन. ओके. ओके, दिस इज फॉर यूनरी ऑपरेटर. ये जो मेथड है ये वाला, दिस इज फॉर यूनरी ऑपरेटर्स. So I should mention here, no, for unary operators. Fine. किसी को कोई भी डाउट? Then again let's call display function. देखते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ. Return and end. Okay. कुछ गड़बड़ है? Okay. Error resolved. रन करें इसको. दिखा बेटे आउटपुट? Yes. Are you able to understand it? I've taken a very simple example that how we can overload a unary operator. Yes, ma'am. समझ आ गया. किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हो आप, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करनी है. So what you have, the very first step for overloading, the process of overloading involves, you have to create a class. Y class, it will define a data type, okay, that is used in the overloading operation. हम इस data type को use करना चाह रहे हैं overloading operation में, ठीक है. So I have to define a class, first a class. उसके बाद इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में हम क्या डिफाइन करेंगे? ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन करेंगे. ओके, ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन करेंगे.
कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर फंक्शन? कौन सा फंक्शन है ये? एनीवन? Ma'am, can you please repeat the question? What is the type of this operator function? In context of this class, what is the type of this operator function? Void. It is a member function. ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है। ये जो ऑपरेटर फंक्शंस होते हैं इनको आप एक क्लास का क्या बना सकते हो? मेंबर फंक्शन की तरह बना सकते हो। देख रहे हो ना आप, मैंने ऑपरेटर फंक्शन को मेंबर फंक्शन ही बनाया है। यस। एक और चीज बताओ, ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Yes, it is very easy to see it is static or non-static. It is non-static. मैंने एक आप जो ऑपरेटर फंक्शन बनाते हो, that is a non-static member function of this particular class. Okay, fine. There is another method of creating operator function. You can, it is not necessary कि आप इसको इसका member function ही बनाओ। क्यों? यहाँ पे इस प्रोग्राम में बेटे कितनी डेटा टाइप्स हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कितनी है इस प्रोग्राम में? I need answer from you only. How many user defined data types are there in this code that I have written? मैम यूजर डिफाइंड है तो मैम एक ही है, केवल एक क्लास। ही है, उसका नाम है स्पेस। यस मैम, क्लास स्पेस है, स्पेस। हाँ, तो ये बेटे क्लास तो कीवर्ड है, यूजर डिफाइंड डेटा यस टाइप। मैम, यस सॉरी 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 मैम, मतलब कहने का मतलब No, यूजर that's डिफाइंड। absolutely fine. I just want you to make your mind कि भाई आपको ये दिखे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? स्पेस। क्योंकि हमने यहाँ क्लास तो बनाई है, बट आइडली हमने क्या क्रिएट की है? हमने स्पेस नाम की एक डेटा टाइप बनाई। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम में एक और क्लास हो, जरूरी तो नहीं कि आपने एक ही क्लास रखनी है, आप एक से ज्यादा क्लास भी तो रख सकते हो। अगर हमने एक और क्लास बनाई अल्फा, एंड आई वांट टू यूज दिस ऑपरेटर फंक्शन एग्जैक्टली सेम फॉर अल्फा, तो क्या हम अल्फा के अंदर फिर से डिफाइन करेंगे ऑपरेटर फंक्शन? वो इतना अच्छा आइडिया नहीं लगता। अगर काम यही करवाना है आपने, तो हर हर डेटा टाइप के अंदर, हर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर इसको अलग अलग मेंबर फंक्शन क्यों बनाना है? आप इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बनाओ, जैसे आपका मेन फंक्शन है ना आपके कोड में, आप इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बनाओ। उसके बाद हर क्लास के अंदर इस फंक्शन को क्या बना दो आप? फ्रेंड बना दो। यस, हर क्लास के अंदर इसको क्या बना दो? फ्रेंड बना दो। इस तरीके से आपको इस फंक्शन को एक ही बार डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको हर बार डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप क्लास के अंदर बनाओगे तो। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन कि आप इसको मेंबर फंक्शन की तरह बनाना चाहते हो या एक फ्रेंड फंक्शन की तरह बनाना चाहते हो। फ्रेंड फंक्शन की तरह भी करेंगे, बट आई वांट टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो बताओ मुझे। यस मैम, एक डाउट था। यस, प्लीज मैम आस्क। ये पूछना था कि लाइक अगर हम लोग उसको फ्रेंड फंक्शन की तरह बनाएंगे तो हम लोग एक फंक्शन को फिर मैम एक ही तरीके से यूज कर पाएंगे ना मैम? बेटे फ्रेंड फंक्शन वाला जब करेंगे अब तब फ्रेंड वाला डाउट पूछना, अभी इसमें डाउट है मेंबर फंक्शन वाले में? नहीं मैम, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये आपको समझ आ गया अच्छे से? ये एवरीवन, ऑल ऑफ यू राइटिंग चैट बॉक्स, इसको फट्टे नहीं मारने, इसको अच्छे से समझना है। ओके, फ्रेंड फंक्शन वाला भी करेंगे, डोंट वरी। सो अब हमने ये सीख लिया, ये चीज, ये सब कुछ आ गया हमें कि फ्रेंड ऑपरेटर फंक्शन कैसे बनाते हैं, फिर ऑपरेटर फंक्शन में ये सारी चीजों का क्या मतलब है। ठीक है, हमने ये भी सीखा अभी कि ऑपरेटर फंक्शन को आप एक क्लास का मेंबर फंक्शन भी बना सकते हो और फ्रेंड फंक्शन की तरह भी बना सकते हो। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन अभी हम करेंगे। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन इन केस ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स? फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ता जब आप यूनरी ऑपरेटर यूज करते हो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये मेंबर फंक्शन था, यहाँ पे जब आपने इसको कॉल किया, क्या आपने कुछ पास किया? यहाँ पे नहीं किया, इस यहाँ पे वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है। जिस ऑब्जेक्ट ने इस
ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया, उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ये डायरेक्टली उनके नाम के साथ एक्सेस कर सकता है। तो जब आप ऑपरेटर फंक्शन को एज मेंबर फंक्शन बनाते हो, इन केस ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स, देयर इज नो नीड ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट. There is no need of any argument. Why? Because the private the data members of the object are automatically available. How? जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसकी अवेलेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. Yes. So shall we try with the friend function? Yes, ask it. No, ma'am. अच्छा चलो, उससे पहले हम अपने कोड में चेंज करके देखते हैं. इसको थोड़ा सा कमेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है. Let's see if this was not in our code, if this was not in our code, and I have created one more object. Okay. Now so what's the meaning of this? Let's see. So this is saying invalid argument type space to unary expression. So okay, can we do this? Invalid argument. So if you see, you cannot do this operation because this is a user defined data type, right? So what we have done, we have defined an operator function so that we can perform this operation. Now after defining the operator function, this error will disappear. Okay, this is absolutely fine, right? So now we will see that how we can overload a unary minus operator using a friend function. So I want to make this function as friend function. I'll write here friend friend. Okay. And moreover, I hope you know that in friend function arguments होते हैं बेटे. Friend function के अंदर आपको argument देना पड़ेगा, which is the reference of object. Okay. Now you have created this operator function as a friend function. We need to define this function somewhere in our code. Now this is a friend function. It is not a class member function. You can remove this. Okay. Here I will write reference of the object. And now what I want to do is s dot x is equal to minus of s dot, like this. माइनर से चेंजेस किए हैं हमने, कोई बहुत ज्यादा नहीं. अगर आपको फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप ये चेंजेस कर सकते हो. अगर किसी को ये डाउट है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों पास किया यूनरी ऑपरेटर के केस में, यूनरी ऑपरेटर के केस में फ्रेंड फंक्शन, अगर आप ऑपरेटर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना रहे हो, देन यू हैव टू टेक वन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, यू हैव टू टेक वन ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड दैट टू एज रेफरेंस. क्यों? क्योंकि ये इसका फ्रेंड फंक्शन है. फ्रेंड फंक्शन होने का मतलब ये है कि वो उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को असेस कर सकता है, बट with using object name and dot operator. Friend function cannot directly refer x by its name. I hope this much basic is now clear to you. Yes? You find it difficult to understand, or is it okay for you to get this feel that you need this argument here? Now how will you call? We will call it like we will write it as operator. Okay, we will write it PERATOR, operator minus bracket में we will pass this
So we have called this function operator function. This is function call. Function call के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? Function name की. And I have already told you कि ये function का नाम है ये. Operator keyword along with the operator is name of the function. And bracket में you have passed this object and you have to receive it as reference. Okay. Simple. This is call. अच्छा नहीं लग रहा आपको ये टॉपिक? कितना मजेदार है. Yes. Let's just run this code. Okay. I think I haven't called display after start. Okay. Sorry. So if you can see, but the difference between the previous code and this code is that in the previous code, I have created this operator function as a member function. Member function के अंदर अगर आप यूनरी ऑपरेटर को ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हो तो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्वोक करेगा उस फंक्शन को उसके आर्ग्यूमेंट्स उसके मेंबर्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं. Another method is you can create a friend function. ऑपरेटर फंक्शन को आप क्या बना सकते हो? फ्रेंड फंक्शन बना सकते हो. बट ऑब्वियसली फ्रेंड फंक्शन डेटा मेंबर्स को उनके नाम से नहीं बुला सकता. आपको फ्रेंड फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़ता है. तो लाइक दिस. अगर आप बाइनरी ऑपरेटर को करोगे, मान लो प्लस करना है आपने, प्लस के लिए आपको दो आर्गुमेंट्स की जरूरत है ना, 2 आर्गुमेंट्स चाहिए. तो अगर आप फ्रेंड बनाओगे ना तो आपको यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे. We will see that example too. Okay. इतना सा डाइजेस्ट करना was okay for you today.